Okay, Ji, we can start now. I believe so far participants have joined. So I welcome you all and Assalamu alaikum and Ramadan Kareem to everyone. Welcome to Pakistan Institute of Corporate Governance Shareholder Awareness Webinar Series. Today we dive into an essential topic, Board of Directors and General Meetings, understanding the process. Our goal today is to shed light on governance mechanisms, roles, and the intricacies of decision making within corporate boards and general meetings. Grasping the inner workings of corporate boards and empowering shareholders, especially minority shareholders, in the decision making process is vital for corporate health. Today, we will explore processes, legal requirements, and best practices for conducting effective board and general meetings. Our discussion will encompass the structure, regulatory guidelines, and the roles and responsibilities of the board of directors. We will also delve into the best practices for organizing and managing meetings and strategies to boost shareholder participation and engagement. My name is Ghazain Khan, and I serve as the Manager Governance at PICG. PICG is dedicated to promoting best corporate governance practices across Pakistan with a special focus on board independence, gender diversity, and shareholder rights. Through such initiatives, PICG aims to strengthen corporate governance structures and foster a transparent business environment. We are honored to have two distinguished experts with us today to share their insights. Mr. Shahzad Afzal Khan, Registrar of Companies, Securities and Exchange Commission of Pakistan. Mr. Khan is a seasoned expert in corporate governance, corporate finance, and AML CFT regulations with over 25 years of experience. A recipient of the Tamgha Imtiaz for his contributions to anti money laundering, he played a key role in Pakistan's removal from the FATF grey list. Previously, he led SECP's adjudication division in internal audit, ensuring compliance with corporate laws. As Registrar of Companies, he oversees company registration, statutory compliance, and corporate governance enforcement in Pakistan. Mr. Ajeet Kumar, our second panelist, Chief Regulatory Officer of Pakistan Stock Exchange. Mr. Kumar is a capital market regulatory expert with 15 years of experience, currently leading Regulatory Affairs Division at PSX. He has been instrumental in shaping regulations for Pakistan's capital markets, including developing a surveillance system and digital onboarding of investors. Prior to joining PSX, he contributed to policy development at SECP. We will begin the session with a presentation by Mr. Shahzad Afzal Khan, followed by a question and answer session. If time allows, we will take 2-3 questions before proceeding with Mr. Ajeet Kumar's presentation. After both presentations, we will have a general question and answer session with our panelists. Participants are encouraged to submit their questions in the chat box along with their name, designation, and company name, and ensure that the questions are relevant to the topic. Without further ado, let's begin with Mr. Shahzad Ul Khan's presentation. We will start with this presentation. Shahzad sir, over to you. Thank you so much, Ghazain. Thank you for the gracious introduction and an opportunity to SECP to interact with the stakeholders on this key and relevant issue. The table of content has already been discussed by Mr. Ghazain, and it will be featured for this part of the presentation. It will be featured around purpose and structure of the board and general meetings, key role and responsibility of BOD, the importance of the effectively recording minutes of the meeting, and the best practice for organizing and managing the board and the general meeting. Now, I move to the purpose of the board and general meeting. The primary objective is, in terms of role, the strategic oversight by the board of directors, the policy formation of the board of directors, the management supervision by the board of directors. However, they are also responsible for protecting the shareholders' interest and ensuring regulatory compliance. They play a key role in conducting the decision-making through these board meetings. In terms of general meeting, it is a forum for shareholder communication, voting on the key issues, and approval for the financial statements. There are 3 types of general meeting: statutory meeting, annual general meeting, and extraordinary general meeting. We'll discuss them in details in ensuing slides. The key feature involves shareholder participation and voting rights. Let's start with the discussion on the board of directors and the minimum number of directors in each. The Section 154 of the Companies Act dictates that single member company needs only 1 director. Private company must
have at least 2 directors. There can be more, but not more than 20. In terms of public company, at least 3 directors. This is public unlisted company. However, the structure of listed company is quite restricted by different legislation, including the Code of Corporate Governance, which includes 7 directors. Now, the composition now comes to further details through Code of Corporate Governance among the at least 7 directors. So you then have to have 2 or 1/3 of independent director in the among these 7 director or more, and then there should be not more than 2 or 1/3 in the executive members of the board. So, and also there is restriction that one of the directors should be a female director. So the constitution comes if there are 7 directors, 2 directors are non-executive, 2 directors are independent, 1 female. The female can also be one of the independent director, and the rest of the directors should be non-executive director. ये कैसे अपॉइंट कैसे होते हैं डायरेक्टर्स जो हैं वो उनकी लॉ कैसे अपॉइंटमेंट का तरीका बताती है 4 तरीके से लॉ कहता है कि आप अपॉइंट हो सकते हैं एज डायरेक्टर द फर्स्ट वन इज इलेक्शन ऑफ कोर्स आप 159 के थ्रू डिक्टेट होते हैं आप जनरल मीटिंग में जाते हैं और इलेक्ट हो जाते हैं दिस इज द वन वे ऑफ डूइंग इट द अदर इज सेक्शन 164 रिफ्लेक्ट्स के जी आप स्पेशल इंटरेस्ट को अगर रिप्रेजेंट करें बैंक का लोन है कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है डोनर है any of these category can appoint one director in term of section 164 जो किसी स्पेशल इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा रिप्रेजेंट कर रहा होता है और फाइनली गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए स्पेशल प्रोविजन है 165 सेक्शन जहां पे गवर्नमेंट अपने डायरेक्टर को नॉमिनेशन के थ्रू अपॉइंट कराती है एक गलती लिस्टेड कंपनीज में अक्सर हो जाती है कि वो 165 और 164 को 159 में मिंगल अप कर देते हैं प्रोसेस को बट इफ दैट इज द केस के 164 और 165 का जो अपॉइंटी है उसने 159 के प्रोसेस से आउट हो जाना है और उतने नंबर ऑफ वोट्स माइनस हो जाने हैं थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस इसी तरह ये जो 3 कैटेगरीज में 2 कैटेगरीज मैंने आपसे अर्ज की थी जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की है और फीमेल डायरेक्टर की है इसके लिए अब कोड ये डिक्टेट करता है कि आपने स्पेशल रन करना है प्रोसेस फॉर एग्जांपल अगर एक ही फीमेल डायरेक्टर है तो शी विल बी डीम्ड इलेक्टेड फॉर एग्जांपल 2 ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं दे विल बी डीम्ड इलेक्टेड लेकिन अगर ज्यादा है तो देन अ सेपरेट वोटिंग प्रोसेस विल रन फॉर दीज अपॉइंटमेंट्स तो मैंने आपसे अर्ज किया था 4 तरीके हैं उसमें तो हमने इलेक्शन डिस्कस कर लिया हमने स्पेशल इंटरेस्ट डिस्कस कर लिया हमने गवर्नमेंट नॉमिनेशन डिस्कस कर ली एक और तरीका है कि अगर ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर्स अगर शेयर होल्डिंग में ऐसा चेंज आ जाए जो सेक्शन 162 अट्रैक्ट करता हो मतलब ये है कि उन्होंने एक डायरेक्टर इलेक्ट करने की वोटिंग राइट अज्यूम कर ली है न्यू shareholder ने then they can call for fresh election तो ये ऑलमोस्ट 159 के ही पैरामीटर्स पे होगा बट ये ड्यूरिंग अभी 3 साल का टर्म पूरा नहीं हुआ लेकिन ड्यूरिंग शेयर होल्डर में चेंज आ गया तो दैट शेयर होल्डर हु कैन एटलीस्ट इलेक्ट वन डायरेक्टर कैन आस्क द कंपनी टू होल्ड फ्रेश इलेक्शंस तो ये मिड टर्म इलेक्शन इसको आप कह सकते हैं कि मिड टर्म में भी एक इलेक्शन का तरीका है अच्छा 5वां तरीका है लेकिन ये तरीका एक्चुअली उस सूरत में ही ट्रिगर होगा कि जब कोई कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी which is section 161 which says that any casual vacancy occurring among the director may be filled up by directors तो ये वो तरीका कार है जिसमें कोई भी डायरेक्टर आ जाते हैं अच्छा कैजुअल वैकेंसी की टर्म जो होगी वो सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए होगी फॉर एग्जांपल आपके 3 साल का टर्म शुरू हुआ 22 से 25 का तो 24 में एक साहब ने अपनी रिटायरमेंट ले ली और वो या रिमूवल हो गई उनकी तो ऐसी सूरत में जो रिमेनिंग टर्म होगी वो किसी कैजुअल वैकेंसी के थ्रू फिलअप होगी इसके बाद चेयरमैन ऑफ द बोर्ड जो बोर्ड मेंबर हैं वो अपना एक चेयरमैन इलेक्ट करेंगे एंड दिस होल्ड्स गुड फॉर स्टेट ओन्ड एंटिटीज एज वेल कि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज इलेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं देयर शुड बी 2 और अभी हमने ऊपर इसको डिस्कस कर लिया है The next is the type of general meeting.
अभी हमने 3 टाइप्स को जिक्र किया। जो पहली स्टैट्यूटरी मीटिंग है 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या 9 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो भी अर्लियर आ रहा है उसके ऊपर ये स्टैट्यूटरी मीटिंग करना जरूरी है। अगर एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो सेक्शन 132 के तहत होती है, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अगर एनुअली ये 120 दिन के अंदर अंदर फाइनेंशियल ईयर एंड के ऊपर आपने इसको कंडक्ट करना है। इसका 21 डेज का प्रायर नोटिस चाहिए। For the listed company, there's no exemption to this 21 days notice. For private limited companies, there are exemption कि अगर तमाम लोग इस बात पे एग्री हो जाएं who are entitled to attend the meeting, तो वो शॉर्टर नोटिस कर सकते हैं। 1984 का जो ऑर्डिनेंस था उसमें ये अलाउंस था कि रजिस्ट्रार की पावर से आप शॉर्टर नोटिस कर सकते हैं, बी इट लिस्टेड और अनलिस्टेड, लेकिन वो 2017 के एक्ट में ये प्रोविजन नहीं अवेलेबल है। और सिर्फ अब 21 लिस्टेड कंपनी के लिए प्रोविजन है ही नहीं, दे कैन नॉट गो फॉर शॉर्ट नोटिस। और इसके अलावा कोरम को हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर भी लेंगे, एक और स्लाइड है जो इसको बहुत एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन 10 मेंबर फॉर लिस्टेड एंड 2 मेंबर, या आर्टिकल कोई और सजेस्ट कर रहा हो तो वो आर्टिकल के अंदर जो भी बात लिखी हुई है उसके मुताबिक एट लीस्ट 2 इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 135 फॉर एवरी टाइप ऑफ कंपनी विच इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी। सिमिलर गोज फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, किसी भी वक्त कोई भी अर्जेंट मैटर है जो कि रिक्वायर करता है शेयर होल्डर की अप्रूवल के लिए, तो किसी भी वक्त 21 दिन का नोटिस देके आप ये मीटिंग कॉल कर सकते हैं। जो पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं, मैं जान के ये सारे सेक्शन यहाँ पे रखे हैं और ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे मेंबर्स से जो भी हमारे साथ ज्वाइन कर किए हुए हैं कि वो ये रिकमेंडेड रीडिंग है। इन सेक्शन खास तौर पे जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं, जो डायरेक्टर्स हैं बोर्ड पे, ये जो सेक्शन लिखे हुए हैं इनको आपने खुद पढ़ना है एक दफा, ये लाजमी आपने, जब आप समझे कि बहुत जरूरी है कि इनकी अंडरस्टैंडिंग आपके ऊपर क्लैरिटी के साथ हो। और अगर इंटरप्रिटेशन में आपको कोई भी मसला हो तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। एसईसीपी भी इंटरप्रिटेशन में हेल्प कर देता है, लीगल काउंसिल्स भी अवेलेबल होते हैं, बट गोइंग थ्रू देम इन पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, तो जो प्रोविजन एज टू मीटिंग एंड वोट्स इज कंटेन इन सेक्शन 134, जिसमें आप पर्सनली भी अटेंड कर सकते हैं, वीडियो लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं, पोस्टल बैलेट के थ्रू अपने वोट्स भी कास्ट कर सकते हैं ऑन द एजेंडा। I move on to the power of the board, which is section 183. ये बात याद रखें कि लॉ खुद बता रहा है कि कंपनी चलानी किसने। The business of the company shall be managed by the board, which may exercise all such power of the company. This is provision 1 of this section, 183(1), कि आप ही ने सारे काम करने, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रन द कंपनी। और तमाम पावर्स जो हैं, अब ये डाइकोटमी ऑफ पावर है या ट्राइकोटमी ऑफ पावर है। द पावर्स वेस्टेड विद द बोर्ड, और कहाँ से मिलेगी ये पावर? एक्ट के अंदर लिखी होगी, आर्टिकल्स के अंदर लिखी होगी, या स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर लिखी होगी। ये 3 जगह हैं जिनके जो कंपनी के रिकॉर्ड में लिखा होगा कि कौन सी पावर्स बोर्ड एक्सरसाइज करेगा। तो ये सेक्शन अब सब सेक्शन 2 में जाके फर्दर बात करता है कि ये जो सब सेक्शन 2 के अंदर जो बातें हैं, ये तो आपने रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड के थ्रू करनी है। यू कैन नॉट डू इट अदरवाइज। एक आदमी बैठ के ये फैसले नहीं कर सकता। For example, further issue of share, investing companies fund, making loan, authorizing contract, approving financial statement, approving employees bonuses. This is not an exhaustive list. 183 subsection 2 has to be seen to infer the exact requirements, जिसके अंदर writing of bad debts है, comprising compromising on the lawsuits या releasing of claims है, या टेक ओवर और एक्वायरिंग कंट्रोल सब्सटैंशियल स्टेक इन अनदर कंपनी। तो इस तरह के जितने ये आप खाली सबसेक्शन 1 के थ्रू, मतलब ठीक है रिटर्न के मैनेज बाय द बोर्ड, बट लेकिन सबसेक्शन 2 कहता है कि ये वाले फैसले मैनेज बाय द बोर्ड थ्रू रेजोल्यूशन आपने करना है, मिलके बैठने, मीटिंग करनी है और मीटिंग के बाद ये फैसले एक्सरसाइज करने हैं। अब फैसले एक्सरसाइज करने की जो तरीका कार है, नाउ वी आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में
सिर्फ एक जगह लॉ है जहां पे लॉ ने एक कोरम डिफाइन कर दिया है कि अगर इतनी राइट्स आपके पास आते हैं, और वो मैं डिस्कस करूंगा अगली स्लाइड में, अदरवाइज मेजॉरिटी से सारे फैसले होते हैं। तो उन रेजोल्यूशनों में कोई ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होती है। लेकिन जर्नल मीटिंग के अंदर जो रेजोल्यूशन होती है उनको दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सिर्फ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए है, जिसमें कि आपके अप्रूवल ऑफ अकाउंट है, आपकी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है, आपका इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर है। ये इसके अलावा दो और यूजुअली प्रोविजंस होती हैं जो कि उसके अंदर लिखी होती हैं, जिसमें कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है। और इसके अलावा तो बाकी तमाम के तमाम फैसले आपके ऑर्डिनरी ये ऑर्डिनरी बिजनेसेस हैं। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के अंदर आपकी सिंपल मेजॉरिटी से जो रेजोल्यूशन पास होती है उसको आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहते हैं। यानी बोर्ड जनरल मीटिंग के अंदर जितने भी लोग शामिल हैं, उनकी जो मेजॉरिटी ने फैसला कर दिया है, उनकी मेजॉरिटी ने जो फैसला कर दिया, सिर्फ आपने उन्हीं के बारे में बात करनी है। स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो डिस्कस कर रहा है जहां पे 3/4 ऑफ द मेंबर्स जो हैं एंटाइटल्ड टू वोट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एंटाइटल्ड टू वोट, प्रेजेंट इन पर्सन और प्रॉक्सी और थ्रू पोस्टल बैलेट्स एट अ जनरल मीटिंग। प्रेजेंट की 3/4 है। ये बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि शायद 3/4 की टोटल शेयर होल्डिंग का 3/4 आपको चाहिए। नो, दी 3/4 ऑफ द प्रेजेंट मेजोरिटी चाहिए। सिर्फ एक जगह है जहां पे 3/4 की प्रेजेंस की बात नहीं की गई, बल्कि वो सेक्शन 38 है, जहां पे अल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स है, उसको हम शायद कहीं डिस्कस भी कर रहे होंगे। वो सेक्शन 38 के अंदर जाके आपने सिर्फ ये करना है कि जो एग्रीव्ड लोग हैं उनका 3/4 की पावर, उनकी 3/4 की असेंट चाहिए वहां पे। अदरवाइज जो प्रेजेंट हैं बाकी तमाम रेजोल्यूशन, जैसे मैंने एग्जांपल ऑफ यूज केसेस मैंने बता दिए, जैसे रूटीन केसेस हैं, आपके रूटीन मैटर्स हैं, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है, अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, सेल ऑफ एसेट है, इस तरह के यानी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एसेट, इस तरह के जो प्रेजेंट लोग हैं उनकी जो भी मेजॉरिटी ने ये फैसला कर दिया, वो फैसला जनरल मीटिंग का फैसला कहलाएगा। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए तो वो चेंज ऑफ कंपनी नेम है, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस है, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल है। इसमें 38 का मैंने आपको जिक्र कर दिया कि 38 के अंदर एक फर्दर कथन है कि जो अग्रीव्ड लोग हैं, आर्टिकल में अगर किसी का राइट इन्फ्रिंज हो रहा है और वो जिनके राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं उनकी कोई अग्रीव्ड है, तो फिर उनका 3/4 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर होल्डर है, उसके पास 36% शेयर्स हैं, तो वो 36% शेयर होल्डर किसी बात से अग्री नहीं करता है, तो ऐसी रेजोल्यूशन चाहे अब वो प्रेजेंट वाली लो, और वो उस मीटिंग में आता भी नहीं है, लेकिन अब प्रेजेंट वाली कदगन जो है वो यहाँ पे नहीं लगेगी, बल्कि वो उसका जो राइट है वो एग्जिस्ट करता रहेगा only in the scenario of section 38 for change of article of association. Otherwise, it is always the thumb rule is 3/4 of the present majority. Same goes for conversion of company type, further issue of capital, employee stock option, alteration of share capital, etc. अच्छा, अब फर्दर डिस्कस हमने कर लिया था पिछली स्लाइड के अंदर के दो के रेजोल्यूशन है, लेकिन रेजोल्यूशन के अंदर जो बिजनेस डिस्कस होना है वो दो तरह से डिफरेंशिएट होता है, एक ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विद ऑर्डिनरी बिजनेस हो सकती है, फॉर एग्जांपल डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन स्पेशल बिजनेस के साथ भी हो सकती है, एंड स्पेशल बिजनेस कुड बी सेल ऑफ एसेट या राइट ऑफ द डेट ऑफ द ऑफ एन एसोसिएटेड कंपनी। तो ये भी एक ऑर्डिनरी बिजनेस के थ्रू ही पास हो सकती है, लेकिन ये बिजनेस स्पेशल होगा। जो फर्क होगा बिटवीन द टू इज वो ये होगा कि जो ऑर्डिनरी बिजनेस है इसके साथ आपको कोई वर्किंग पेपर्स यानी नोटिस ऑफ द मीटिंग में स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्पेशल बिजनेस में आपने हमेशा स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट एनेक्स करना है, जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स आपने बतानी है कि क्या रेजोल्यूशन, जिसमें ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आपकी जाएगी
और ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के साथ उसके तमाम गवर्नेंस जाएंगे जो कि उस मीटिंग की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी के लिए पूरी एक रेगुलेशन है कि अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किस तरह के डिस्क्लोजर होंगे, और अगर आप लोन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किस तरह के डिस्क्लोजर होंगे। ऑल दैट डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड पार्ट ऑफ द नोटिस ऑफ द मीटिंग। इसी तरह अगर हम कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग की बात करें तो हमारा पहला जो कॉलम है, सेकंड कॉलम बोर्ड मीटिंग को डिस्कस कर रहा है और थर्ड कॉलम जनरल मीटिंग को डिस्कस कर रहा है। सेक्शंस ऊपर कोटेड हैं, जो कि कोरम फॉर द लिस्टेड कंपनी इज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर और 4 विच एवर इज ग्रेटर। इसी तरह अगर कोई और कंपनी है तो उसके आर्टिकल्स ही डिफाइन कर रहे होंगे कि उसका कोरम क्या होगा। अदर देन लिस्टेड कंपनी सिर्फ आप वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो जनरल मीटिंग का कोरम है वो है 10 मेंबर प्रेजेंट पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक representing at least 25% of the voting power। यानी दो पैरामीटर्स हो गए, 10 मेंबर्स हो गए और 25% ऑफ द शेयर होल्डिंग हो गई। तो ये जनरल मीटिंग की इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। इसको अगर कोई मीटिंग प्रोसीड ही नहीं हो सकती अगर वो कोरम जुडाइस हो जाए, यानी अगर कोरम एग्जिस्ट नहीं करता मीटिंग कैन नॉट गो फर्दर। सेम गोस फॉर special provision अगर if there are not enough director to form a quorum for filing a casual vacancy। ये प्रॉब्लम था जी कंपनीज एक्ट में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में खास तौर पे, जहाँ पे कोई अगर आर्टिकल किसी को नंबर डाल देते या फॉर एग्जांपल लिस्टेड कंपनी में भी ऐसा कोरम ही ना फॉर्म कर सकते और कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है, तो वहाँ लॉ ने एक आसानी क्रिएट कर दी कि कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए जो भी रिमेनिंग डायरेक्टर हैं दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट द कोरम। अच्छा जी, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है जनरल मीटिंग के अंदर तो फिर ऐसा होगा कि मीटिंग डिसॉल्व हो जाएगी और वो नेक्स्ट वीक के सेम डे के ऊपर डेफर हो जाएगी। और अगर उसमें भी कोरम मीट नहीं होता तो फिर एटलीस्ट टू शैल फॉर्म द कोरम अनलेस द आर्टिकल स्टेट्स अदरवाइज। तो ये स्पेशल प्रोविजंस है। इसको हम जरा थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड लिस्टेड कंपनी के अंदर अपॉइंटमेंट होनी है 14 डेज के अंदर, और चेयरमैन जो है वो अपॉइंट होंगे 3 साल के लिए। लेकिन अदर कंपनीज में जो अदर देन लिस्टेड कंपनी है वहां पे वन ऑफ देयर मेंबर टू बी, जो भी एक मेंबर है वो बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन डिसाइड हो सकते हैं और उनका भी ऑफिस 3 साल के लिए होगा। और अगर कोई चेयरमैन नहीं होते तो फिर उनकी एब्सेंस में या अनविलिंग कोई बोर्ड मेंबर हैं तो जो भी डायरेक्टर प्रेजेंट है वो चूज कर सकते हैं कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के लिए कोई नया चेयरमैन ऑफ द बोर्ड अपॉइंट कर दें। इसी तरह जनरल मीटिंग के अंदर जो चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग है वो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ही चेयरमैन ऑफ द मीटिंग होंगे। लेकिन ऐसे सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं कि चेयरमैन आए नहीं है या वो प्रेजेंट नहीं है या वो विलिंग नहीं है, तो फिर रिमेनिंग बोर्ड में से कोई एक मेंबर एज चेयरमैन हो जाएगा। और अगर रिमेनिंग बोर्ड में से भी कोई ना चाहे कि वो चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग बनेंगे तो फिर मेंबर्स अपने दरमियान से कोई एक ऐसा मेंबर चूज कर लेंगे जो कि चेयर करेंगे इस जनरल मीटिंग को। रेलिवेंट कुछ प्रोविजंस को मैंने यहाँ शो कर दिया है जो कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड है, रिकॉर्ड्स ऑफ रेजोल्यूशन और एंड मीटिंग्स है, पावर ऑफ द बोर्ड। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो मैं चाहूंगा कि आप जब भी आपको मौका मिले पहली फुर्सत में आपने इनको जरूर पढ़ना है। जो कि आपने खासतौर पे प्रॉक्सी के हवाले से बात है कि 48 आवर्स में आ सकती है अगर आर्टिकल्स अदरवाइज ना सजेस्ट करते हो। प्रॉक्सी शुड बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, वोटिंग कब होनी है, पोल ऑफ डिमांड कब आना है, ये तमाम चीजें इन सेक्शनों के अंदर पूरी बातचीत इसकी लिखी हुई है। एंड वी कैन इफ देयर आर क्वेश्चंस वी कैन रिवर्ट बैक लेटर ऑन दीज, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है तो इसको हम जरा इस तरह ही डिस्पोज ऑफ करें कि रेलेवेंट प्रोविजन रखते हैं और सब्सिक्वेंटली आपको कोई भी मसला होता है तो आप बताएं। फर्दर जो हमारी बात है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, अब ये बात जरूरी है कि गवर्नेंस एंड फाइडेंशियरी ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर है। They must act in accordance with the article of association, promote company objective,
for benefit of member, employees and society. अब ये आपके बैकएंड में 204 हर वक्त when you are director of a company, ये एक सेक्शन है जो आपके बैक ऑफ माइंड में हमेशा रहना चाहिए. आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है to be present on the board, to be present in the meetings of the board, to be contributing towards the resolutions tabled in the board of directors. ये आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है. एक्ट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रमोट कंपनी ऑब्जेक्टिव, एक्सरसाइज ड्यू केयर, skill, diligence in decision making, and avoid conflict of interest and undue gain to self or associate. Maintain independent judgment in the board matters. एक और बात जो बोर्ड मीटिंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने अपना इंटरेस्ट जरूर डिस्क्लोज करना है. आपके सामने जब भी किसी बोर्ड मेंबर के सामने कोई ऐसी रेजोल्यूशन टेबल हुई है जिसमें उनका इंटरेस्ट है, तो पहला काम आपने ये करना है कि उस इंटरेस्ट का आपने डिस्क्लोजर देना है. और दूसरा काम आपने ये करना है कि उस मीटिंग की वोटिंग में अपने आप को एब्सटेन कर लेना है. यू विल नॉट बी पार्ट ऑफ दैट. जो आपके वोटिंग है, आपने उसके वोटिंग के अंदर पार्ट नहीं बनना. एक बात याद रखें, ये तमाम बातचीत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के लिए हो रही है. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ शेयर होल्डर. शेयर होल्डर का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता इंटरेस्ट का किसी भी रेजोल्यूशन में, किसी भी मैटर में. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉन्फ्लिक्ट होता है. उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में दो ही काम करने हैं. सेक्शन 205 कहता है डिस्क्लोजर देना है, 207 कहता है कि आपने एब्सटेन करना है. इसके अलावा 206 के अंदर बातचीत है ऑफिसर्स के हवाले से. सीएफओ है, कंपनी सेक्रेटरी है, अदर ऑफिसर्स, अगर उनका कोई इंटरेस्ट है तो वहां पे भी उसका डिस्क्लोजर मैंडेटरी है. इसी तरह 183 सबसेक्शन 3 कुछ चीजों को मना करता है जो बोर्ड नहीं कर सकता, सिर्फ जनरल मीटिंग कर सकती है. Sell, lease, dispose of significant companies undertaking, value of asset being disposed of or is 25% or more. इसी तरह सब्सिडरी कंपनी या एक्सटेंड रीपेमेंट ऑफ डेट फॉर सर्टेन पर्संस. तो ये 183(1) की कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि वो जर्नल बता रहा है कि ये बोर्ड की सारे काम करेगा. 182(2) में जाके वो कहता है कि ये रेजोल्यूशनों के थ्रू करेंगे, और 183 में जाके कहता है भाई ये काम बोर्ड नहीं करेगा बल्कि जनरल मीटिंग में जाके करेंगे. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द प्रोविजंस. Then we go on to the board, further to the board oversight and performance evaluation. There must be established a system for performance evaluation mechanism of the board, committees, and members. They must maintain a record of all significant policies, approval, and periodic updates. They must ensure directors that they attend all general meeting unless excused for valid reasons. This is very important. Issue formal letter of appointment to directors detailing their role and responsibility. यहाँ पे देखें जो मैंने जैसा गज़ैन ने आपको बताया भी कि जितनी मैंने एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग की, मोस्ट ऑफ टाइम डायरेक्टर्स को नॉलेज ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि जी ये हमारी रिक्वायरमेंट है एंड दिस रिक्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेट बाय देम. ये एक जर्नल इसका हालांकि डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम इतना कंडक्ट किया जाता है और करवाया जाता है, but going through one training program in 3 years time may not make one person equipped with all the requirements. तो ये बड़ी important requirement है कि कंपनी ongoing training program जरूर initiate करे within सिस्टम. आपके पास ऐसा मैकेनिज्म हो कि आप वो जो कहते हैं शार्पन द स्किल, उस स्किल को शार्पन करने की जरूरत है जो कि बोर्ड के इफेक्टिवनेस को बढ़ाए. तो उन ट्रेनिंग्स की उन सेक्शंस की रीइंफोर्समेंट करने की जरूरत है, उनकी इंटरप्रिटेशन पे डिस्कशन करने की जरूरत है, बिसाइड डिस्कसिंग ऑफ कोर्स द ऑपरेशनल मैटर्स ऑफ द कंपनी. Then there is one other important requirement is disqualification of director, which is contained in section 172. The commission can disqualify a director up to 5 years for the things mentioned in that section. और बहुत सारी उसमें बातें लिखी हुई है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो you can be disqualified from the position of director.
Now we move on to the next section, which is importance of effectively recording the minutes of the meeting. सारी board meeting कर ली और proper minute ही record ना किए तो it's almost a useless exercise. Meeting minutes must be documented accurately and objectively. The key rule is follow the chronological order to ensure clarity and consistency. Capture the full content of each resolution. Motion क्या present हुई, reasons adoption की या rejection की, or voting outcomes. This must be detailed in the minutes. Uh, Legal and governance significance is also very important. Storage and inspection. हाँ जी, ये कंपनी सेक्रेटरीज जो हमारे साथ मौजूद हैं आज, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दे मस्ट नो कि आपको दिन में 2 घंटे देने हैं इंस्पेक्शन के लिए फॉर द मेंबर्स. दे मस्ट जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे मिनट बुक अवेलेबल हो और वो सब लोग फ्री ऑफ चार्ज गो थ्रू हो सकें उसके उसके कंटेंट से. फाइनली जी, किस तरह स्ट्रक्चर करना है, आपने 4 मीटिंग्स एटलीस्ट करनी है लिस्टेड कंपनी के हवाले से. एजेंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड और वेल प्लान्ड होना चाहिए. जो चेयर है उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी हो, वो सब लोगों को अपॉर्चुनिटी दें टू एक्सप्रेस देयर व्यूज. प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए. मेरे पास एक केस था जहाँ पे खास तौर पे वुमेन डायरेक्टर्स के साथ हॉस्टाइल एटीट्यूड रखा गया था. तो ये आपको डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ लेके जा सकता है. बट रिमेंबर, इसके लिए एक पॉलिसी जरूर, इन हाउस कंपनी पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है. एक सेक्शन आपको इसीलिए कंपनी एक्ट में, दुनिया के किसी कंपनी एक्ट ने ना शेयर होल्डर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखी. हम जब 2017 का एक्ट बना रहे थे उसके अंदर हमने स्पेशल प्रोविजन एक रखी जहां पे हमने कहा कि आप रिस्पेक्टफुल रहेंगे ड्यूरिंग द जनरल मीटिंग. मेंबर्स विल बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द अदर मेंबर्स इन द मीटिंग. तो ये रखा है. अब उसको यूज करते हुए व्हाट शुड कंपनी कैपिटलाइज ऑन कि इंटरनल पॉलिसी एंड प्रोसीजर रख ले कि जनाब ये तरीकाकार आपने अडॉप्ट करना है और इसकी री भी हो, इसकी डिसेमिनेशन भी हो, इसकी अवेयरनेस भी हो. देन ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग कंप्लायंस के अंदर सबसे पहले लीगल फ्रेमवर्क को देखना जरूरी है. क्या लॉ की रिक्वायरमेंट है, नोटिस में क्या चीज भेजनी है, एजेंडा टेबल करना है, उसकी प्रपोज रेजोल्यूशन क्या है, उसके एडिशनल डिस्क्लोजर जिसको स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट कहते हैं, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी और एथिक्स के ऊपर तमाम बातें जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है उसमें डायरेक्टर्स को मेंटेन करनी है. आफ्टर द मीटिंग फॉलो अप इज एसेंशियल, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू मिनट्स, एक्शनेबल रेजोल्यूशंस, और फाइनली जैसा हम पहले कहा गया कि बोर्ड परफॉर्मेंस रिव्यू के ऊपर जरूर आप करें. इंपॉर्टेंस ऑफ द जनरल मीटिंग में जब हम बात करें तो मेंबर की इंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरल मीटिंग के प्रिंसिपल्स में इक्विटेबल ट्रीटमेंट है, क्लियर एंड एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है, और ट्रांसपेरेंट वोटिंग का मैकेनिज्म. जिस तरह के अभी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आप ऑनलाइन वोटिंग मस्ट करेंगे, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द की रिक्वायरमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी मेट. इसी तरह कंपनी के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए, ऑडियो विजुअल एड्स सारी की सारी अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली मेंबर्स उसमें एंगेज हो सकें और अपने लोगों को अपनी बात को प्रॉपरली डिसमिनेट कर सकें. जो मेंबर्स के राइट हैं टू अटेंड द मीटिंग और जो उनका राइट है टू इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड, इनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज की इजाजत नहीं है. और उसके ऊपर इट्स एन ऑफेंस जिसके ऊपर के कंपनी के ऊपर जुर्माने लग सकते हैं. तो ऑफ कोर्स जो मेंबर्स के राइट है इंश्योर करना है कि वो सारे के सारे एडेयर हो रहे हैं. So that was the time allocated to me. Thank you very much for your time and patience listening. I'm available for the question and answers. Thank you. Thank you, Shahzad Saab, for enlightening us with great knowledge, in-depth knowledge on all the sections relevant to this webinar topic. We have received a couple of questions. In fact, as expected, we've received so far 4 5 questions. But I would proceed with the presentation so that we can timely conclude that and take all these questions, including the ones I'm having with me, in the end of the session after presentation of Mr. Ajeet Kumar. So over to you, No Ajeet worries. Kumar. Please proceed with your presentation. Thank you, Ghazain. Can you see the presentation? Yes, it's visible. Yes. Okay.
First of all, thank you so much, Ghazain, for affording PSX an opportunity to speak with the key stakeholders through the platform of PSX, particularly on the AGM. So as Mr. Shahzad has spoken a lot about the legal structure of the board meetings, AGMs, and also the rights of the shareholders when it comes to engaging with the board and the management through the AGMs. So my presentation is also a recap of what Shahzad has already spoken about in his presentation. So if you can see on the outline of the presentation, it's mainly relating to the strategies that the companies can adopt to engage with the shareholders at the maximum strength level, and also the strategy that the shareholders can adopt to exercise their rights when they are dealing with the company through the AGMs. Some of the concerns that the shareholders have been raising to the PSX and to the SECP in the form of complaints are the disputes and the common challenges faced by the companies when they are conducting their AGMs. And finally, how we can integrate technology when we are doing the AGMs for the shareholders. These are the segments of my presentations. So moving to the first segment of my presentation. So what Sorry, are the Ajeet, can you full screen the presentation, please? Is it okay now? Yes, thank you. Okay, so what are the strategies the companies can adopt to engage the shareholders and also maximize the utility of the AGMs? The best strategy the company can adopt is to comply with the regulations. There are significant set of regulations prescribed by the SECP and also the stock exchange for conducting an effective AGM. And if any company is complying with the minimum regulations, the company is adopting the best practices. The starting point for the AGM is the service of the minimum 21 days notice specifying date, time, and the venue of the AGM. This is the first and foremost duty of the listed company to make sure that the notice is served to every shareholder who is traceable as per the records available with the company, and the notice is presented through electronic means or through courier to the shareholders at least 21 days before the holding of AGM. And within the notice, there are certain minimum disclosures required to be complied with by the company, such as per the PSS regulation, the notice should specify the date, time, and venue. These are the three minimum prescriptions from the PSX, but there are various other prescriptions from the SECP, which I will speak in the later part of my presentation. The statement of the material facts in the notice of AGM seeking special resolution. As Shahzad spoke about the types of resolution, there are broadly two categories of resolution. Number one is the ordinary resolution, where the ordinary business is transacted, and other the special resolutions, which are required to be passed in the AGM with the approval of the shareholders. There are certain set of guidelines prescribed by the SECP that what comes under the scope of special resolution, which should be presented in the AGM and require the members' approval. For example, change of name of the company, change of the registered office of the company, alteration in the articles, changes in the structure of the company, moving from private to the public, conversion of status of private from single member to the private company and from private to the public, and alteration of the authorized share capital. These are some of the examples which are given in the circular of SECP announced on 3rd April 2018, which speaks about the matter that should be brought before the shareholder for their approval under the special resolution. And it is also required that for the special resolution, there should be a minimum statement of the material facts, which should be clearly elaborated in the notice Ajeet. for the information of the shareholder. Yeah, Ajeet, your voice is distorting. Can you come closer to the mic so that participant can listen to you clearly? Yeah. Okay. And the provision of mechanism for the shareholder to submit the written questions ahead of the AGM. ये हमारी requirement नहीं है, but it is always encouraged to the listed company that if you are serving a notice of 21 day, then you should also prescribe a mechanism for the shareholder to pose questions in writing to the company before coming in the AGM. तो इसमें अगर आप notice के अंदर कोई mechanism बता देते हैं, ideally it should be in the electronic form कि there are certain questions of the shareholder and those questions can be placed before the management or the board before joining the AGM. तो इसमें अगर आप कोई मैकेनिज्म दे देते हैं शेयर होल्डर को तो उससे आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ सकती है, आपके पास एक वेल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इन द एजीएम. अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ टाइम इन होल्डिंग एजीएम बाय द कंपनीज. ये भी एक कॉमन कंसर्न पीएसएक्स फेस व्हेन देयर आर सो मेनी एनुअल जनरल मीटिंग्स हेल्ड
स्पेशली एट द एंड ऑफ द ड्यू डेट्स, जो कि 4 महीने के अंदर 120 दिन के अंदर करनी होती है। तो स्पेशली ये प्रॉब्लम आती है ग्रुप कंपनीज के अंदर, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आपस में एजीएम कर रही होती हैं और उनका जो टाइम होता है ओवरलैपिंग हो रही होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने एक कैलेंडर अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल किया है, जिसमें हमने लिस्टेड कंपनीज को इनकरेज किया है कि जब आप अपनी एजीएम को डिसाइड कर रहे हो, स्पेशली द डेट एंड टाइम, आप इस कैलेंडर को जरूर रेफर करें। उसमें देखें अगर कोई सिग्निफिकेंट ओवरलैपिंग है तो यू शुड ट्राई टू अवॉइड द ओवरलैपिंग एंड सेट अ टाइम जो कि ओवरलैपिंग को ओवरकम कर रहा हो, ताकि शेयर होल्डर जो कॉमन शेयर होल्डर्स हैं वो एजीएम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें और टाइम गैप हो, ताकि अगर इलेक्ट्रॉनिकली भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनके पास टाइम हो ताकि एक मीटिंग से स्विच कर सकें दूसरी मीटिंग के अंदर। इसमें अगर आप देखेंगे हमारी वेबसाइट पे कैलेंडर है, जिसमें आप सारे एजीएम की प्लॉटिंग देख सकते हैं कि किस डेट पे किसने अपनी एजीएम्स अनाउंस की या पास में की हुई है। तो यू कैन प्लान योर एजीएम accordingly. Also, the presence of board of directors, particularly the independent directors and also the senior management. It is required under the regulation that the presence of directors mandatory in the annual general meeting, unless there is any compelling reasons, जिसकी basis you can quit the meeting, but the reason should be recorded with the chair and also well notified to the chair that you are unable to join the meeting. Otherwise, it is mandatory for all the directors to participate in the meeting. तो हम इनकरेज कर रहे होते हैं कि अगर आपके सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि उनकी एक ड्यूटी होती है टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ द मेजॉरिटी शेयर होल्डर एंड आल्सो द माइनॉरिटी शेयर होल्डर, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रेजेंस विद इन द एजीएम मैटर्स अ लॉट एंड आल्सो द सीनियर मैनेजमेंट शुड आल्सो बी प्रेजेंट to respond to any particular question that is coming from the shareholder either before the meeting or during the meeting. Update the shareholders on the critical financial matters affecting the performance of the company. It is again the reason for having the AGM is to engage with the shareholder and also give them the perspective of the company in the historic manner and also in the future, that what are the projections and what are the expected performance of the company based on the history. तो उसमें जब आप शेयर होल्डर के साथ इंगेज कर रहे होते हैं एजीएम के अंदर, तो आपके स्पेशल बिजनेस को तो आपने बिल्कुल वहां पे टच अपॉन करना होता है, लेकिन आप जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नंबर्स रिलीज कर रहे हैं इन दी एनुअल रिपोर्ट, उसकी क्लियर presentation by the CFO and also जो उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है उसकी प्रेजेंटेशन बिफोर द शेयरहोल्डर। ये जरूरी है कि आप शेयरहोल्डर को बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज के अंदर आप उनको एक्सप्लेन करें, ताकि वो अपनी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डिसाइड कर सकें whether they want to stay with their investment decision or they want to buy more or sell the stock. It all depends upon the presentation and the contents of the presentation that you have formulated for the shareholder during the meeting. Dissemination of the resolutions of the AGM through PSS bookcards and also on the company website. Whatever has been decided in the AGM should be transmitted to the shareholder in the form of resolutions through the exchange giving system, which we call the bookcards. And also the resolution should be posted on the company's website for widespread dissemination and reading by the shareholders who participated in the meeting or who could not participate in the meeting. It's not just one AGM that you hold in the year and engage with the shareholder. It is also recommended that you should engage with the shareholder frequently in the form of analyst briefing session or the corporate briefing session, जो कि very recently Pakistan Stock Exchange ने require किया है कि every listed company must hold at least one CBS for the shareholder and also for the analysts who are tracking your company. So you can engage with the shareholder through CBS, through AGMs, also through the EOGMs, the emergent matter which are coming during the course of the year, and you need to pass them with the approval of the shareholders. Again, one of the requirements of the company's code of corporate governance for the listed company is that you should have a solid shareholder communication policy, जिसमें आप इन्वेस्टर्स के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए आप अपने कॉन्टेक्ट पर्सन आप डिस्प्ले कर सकते हैं ऑन द वेबसाइट, और कम्युनिकेशन पॉलिसी को आप लेबरेट कर सकते हैं, जिसमें शेयर होल्डर आपके साथ कंटिन्यूसली इंगेज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस and also debating on the performance of the company and also asking those questions which are relating to the past AGM. जो past AGM में आपने चीजें डिस्कस की जो इनकम्प्लीट थी, उस पर मजीद परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए, प्रोग्रेस को असेस करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन पॉलिसी मैटर करती है, जो प्रॉपरली ट्रांसमिटेड हो टू दी शेयर होल्डर थ्रू द वेबसाइट. So these are some of the means you can adopt. Again, as I said कि इसमें बहुत सारी चीजें already required हैं under the law. And there are certain other recommended practices जो आप adopt कर सकते हैं, जिसमें आप अपने शेयरहोल्डर को ज्यादा engage कर सकते हैं in the AGM, और उसमें आप एक प्रोडक्टिव तरीके से AGM को रन कर सकते हैं, जिसमें उनके कॉन्फिडेंस को गेन करना और उनके जो जो सवाल हैं उनको प्रॉपरली एड्रेस करना,
These are some of the objectives of AGM, that we have the AGM for the shareholder once in a year. The second part of the presentation is enhancing the shareholder. हम किस तरह से ज्यादा shareholder को अपनी मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं ताकि ज्यादा हेल्दी पार्टिसिपेशन हो और आउटकम उतने ही बेहतर तरीके से निकल के इन द फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशंस. So you can try to disseminate the AGM schedule as a news item on the company's website, also post it on the social media platforms of the company. There is again a requirement that you should circulate the AGM and also issue the AGM in the newspaper. But again, you can also ensure that you do a proper marketing of your AGM notice ताकि ज्यादा तक लोगों तक ये डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ज्यादा लोग उसको पढ़ सकें और पार्टिसिपेट कर सकें. So there are some of the means you can adopt. You can put it on your website. You can put it through the social media pages of the companies. Provide details with clarity on attending, participating, voting, and asking questions. So what you can do through the AGM notice again, that you should prescribe a proper manner for allowing shareholders to participate in the meeting either themselves or through the proxy. तो इसका clear आपने एक method बताना है जो कि एक required है under the law, that you should describe that what is the method for participation in the meeting and what is the method for declaring someone as proxy on behalf of the shareholder to participate in the meeting. And provide updates on the issues raised. As I said, that it is very important that कि आपकी जो last AGM के अंदर जो discussions हुई हैं, खासतौर पे वो आइटम जो क्रिटिकल नेचर के थे और वो इनकम्प्लीट थे, उस पर आपने एक अपडेट देना है ड्यूरिंग द करंट AGM, ताकि शेयर होल्डर के जो कंसर्न्स हैं या जो इनकम्प्लीट जो एजेंडा है कमिंग फ्रॉम द लास्ट मीटिंग, दैट शुड बी कंप्लीटेड इन द करंट मीटिंग. हाइब्रिड मीटिंग, दिस इज नाउ अ रिक्वायरमेंट कि आपने AGM को एक इलेक्ट्रॉनिक मोड पे भी आपने एक प्रोवाइड करना होता है टू ऑल द शेयर होल्डर्स ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पेशली दोज हु कुड नॉट पार्टिसिपेट फिजिकली, सो दे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉनिकली. तो आप अपनी शेयर होल्डिंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द best tool the companies should adopt as per the regulation to maximize participation of the shareholder in the AGMs. And again, there are certain beauties of allowing hybrid meeting. The members who are participating electronically, they can vote directly through the electronic means. They can also ask the questions which are recorded by the video conferencing facility. The company can directly respond back to the shareholders then and there. And also, there's a traceable history being maintained by the electronic means. Conform to the schedule, date and time of the venue announced by the company. Again, हालांकि ये प्रैक्टिस बहुत रेयर है, बहुत कम हमें देखने को मिलता है कि कंपनीज आर चेंजिंग द शेड्यूल ऑफ द AGM. It is not recommended at all that you change the schedule of the AGM. You should be well prepared, and the planning should be so strong that you are sticking to the compliance of the requirement that you have notified to the shareholder where and at what time and date you are holding the AGM. तो आप उसको बिल्कुल उसको कंप्लाई करें और एडहेयर करें विद द शेड्यूल अनाउंस्ड. Ensure proper logistic arrangement including ease of access, safety and the guidelines for the participants. लॉजिस्टिक अरेंजमेंट शुरू हो जाते हैं जब आप नोटिस स्टार्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और ट्रांसमिशन करते हैं टू द शेयर होल्डर. वहीं से आपकी जो लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं. और अगेन इट इज आल्सो रिकमेंडेड दैट इन द AGM नोटिस you clearly mention the contact person for the participant, जिसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आप उससे कांटेक्ट करके आप अपने वेन्यू को या उस पर्टिकुलर जगह को आप क्लेरिफाई कर सकते हैं जहाँ पे AGM हो रही है. तो आपने कांटेक्ट पर्सन वहाँ पे जरूर देना है AGM नोटिस के अंदर, ताकि शेयर होल्डर के साथ जब वो AGM में आ रहे तो उनके पास सारी फैसिलिटीज और जो एक्सपेक्टेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसको ओवरकम किया जा सके इन एडवांस, ताकि वो इजीली उसमें पार्टिसिपेट कर सकें. एंड आल्सो द वेन्यू शुड बी सेफ इनफ कि सब उसमें पार्टिसिपेट कर सकें विदाउट एनी डेंजर. कंप्लायंस विद द मिनिमम कोरम पे शहजाद साहब ने आपको बताया था फॉर द लिस्टेड कंपनी. अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि बेस्ट स्ट्रेटजीज आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द लॉ, और कोई भी कंपनी जब कवानीन की मिनिमम कंप्लायंस कर देती है ऑटोमेटिकली उनकी बेस्ट स्ट्रेटजीज जो है वो बैकएंड पे कंप्लाई हो रही होती है, जिसमें पार्टिसिपेशन ऑफ द शेयर होल्डर, engagement of the shareholder and also the effectiveness of the shareholder and the meeting is also ensured at the back end. तो मिनिमम कोरम का मकसद यही है कि मिनिमम पार्टिसिपेशन हो ताकि हेल्दी डिस्कशन हो सके और रेजोल्यूशंस क्वालिटेटिव रेजोल्यूशन पास हो सके. जैसे लिस्टेड कंपनीज में आपको शहजाद साहब ने बताया कि 25% वोटिंग पावर के साथ जो मेंबर्स हैं, एक तो वो पैरामीटर पास हो. सेकेंडली, the minimum number of shareholders required for the listed company is 10.
10 members should be there either electronically or in person in order for the AGM to be conducted in a valid manner. Detailed deliberation on the notified agenda, आपने जो भी एजेंडा नोटिफाई किया है उस पर आप प्रॉपरली टाइम स्पेंड करें, उनको डेलिब्रेट करें और जो सवाल उसके हवाले से आ रहे हैं आप उनको प्रॉपरली एड्रेस करें. Even if you don't have any answer to respond to a particular question then and there, you can also respond to the shareholder letter subsequent to the meeting कि आप उसको through the communication policy, maybe on the website or directly with the shareholder, you can address in person to the shareholder regarding their queries raised in the meeting. Voting right, it's a very significant decision taken by the company ke what are the rights given to the shareholder when they have to vote. There are 4 methods: e-voting, इलेक्ट्रॉनिकली जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो वहीं पे वोट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, प्रॉक्सी के थ्रू जो अपनी रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करते हैं, प्रॉक्सी के पास राइट होता है कि आप शेयर होल्डर के बिहाफ पे वोट कर सकते हैं, बैलेट पेपर जो कि एक मैनुअल तरीका है, पेपर के थ्रू अपनी वोटिंग जो है रजिस्टर करा सकते हैं विद द कंपनी ऑन ए स्पेशल एजेंडा. Again, these are some of the means the companies can adopt, should adopt indeed, to ensure that the maximum participation of the shareholders is generated in the meeting. Again, there are various requirements of the law, but there are certain recommendations from our side that you should adopt to maximize the shareholder participation in the AGM. Some of the concerns जो कि हमारे पास आ रहे होते हैं SECP और PSS के पास in the form of disputes, I can quickly run you through these kind of points raised by the shareholders over the last some of the years. Delay in the service of the notice. Again, जैसे शहजाद साहब ने कहा कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मैंडेटरी है फॉर द कंपनी टू कंप्लाई. अगर उसमें कोई भी नॉन कंप्लायंस होती है या तो वो आपके AGM को इनवैलिड कर देगा या फिर द कंपनी विल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट एंड द PSS रेगुलेशन. तो 21 दिन के नोटिस की जो सर्विस है दैट इज मैंडेटरी. इट शुड बी मिनिमम 21 डे. You can go as high as 30 days, 35 days, but minimum should be 21 day for every shareholder. Sometimes हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं कि 21 दिन का नोटिस नहीं मिला हमें, 20 दिन का मिला, 19 दिन का मिला. सो रेयर है, बट अगेन कंप्लेंट्स आ जाती हैं. जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता लगता है वीकेंड की वजह से देर हो गई, 1 या 2 दिन लग गए, बट नथिंग ऑन पार्ट ऑफ द कंपनी. अगेन कंपनी अपनी एक बेहतर प्लानिंग के थ्रू, अगर उनको लग रहा है कि ईद हॉलीडेज फॉल कर रहे हैं या फिर वीकेंड फॉल कर रहा है, कोई हॉलीडेज फॉल कर रहे हैं ड्यूरिंग दी सर्विस ऑफ द नोटिस, तो आप उसको प्रॉपरली प्लान करके 21 दिन की काउंटिंग के बाद इसको रिलीज करें ताकि you stay compliant with the minimum requirement of the law. Non-provision of certain disclosure of the forms required in the notice. Notice के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, there are certain minimum disclosure requirements that the companies must meet. For example, proxy form. आपने proxy का तरीका वहां पे बताना है कि अगर आप participate नहीं कर पा रहे, what is the alternate mean available to the shareholder to participate in the meeting, and that is a proxy. तो proxy का manner clearly डिस्क्राइब होना चाहिए और प्रॉक्सी फॉर्म अटैच होना चाहिए विद द AGM नोटिस, एनुअल रिपोर्ट एंड आल्सो ऑन द वेबसाइट. समटाइम्स वी रिसीव कंप्लेंट्स फ्रॉम द शेयर होल्डर के प्रॉक्सी फॉर्म हमें नहीं मिला, AGM के नोटिस के साथ अटैच नहीं हुआ होता, वो नोटिस के साथ नहीं लेकिन वेबसाइट पे पड़ा हुआ है या एनुअल रिपोर्ट पे लगा हुआ है, लेकिन इट इज रिक्वायरमेंट दैट आप AGM नोटिस के साथ भी उसको रिलीज करें. Inadequate provision of material facts, जैसे हमने आपको बताया कि स्पेशल resolution is always the center of concentration by the shareholder. Special resolution में आपने एक स्टेटमेंट देनी है जिसमें मटेरियल फैक्ट्स आपने डिस्क्लोज करने हैं, जिसमें पूरी डिटेल आपने पब्लिश करनी है कि व्हाट यू मीन बाय दिस पर्टिकुलर एजेंडा, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द बेनिफिट. तो आपने सारा कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन करना है ताकि शेयर होल्डर उसको पढ़ के फिर पार्टिसिपेट करें, क्वेश्चन कर सकें बिफोर द कंपनी. Specification of special business in the notice on the material matter along the detailed description, ये मैंने बात कर ली है. Inadequate number of directors. Sometimes shareholders say that they have so many questions to ask to certain directors, for example independent director, but they were unable to find the sufficient number of directors in the meeting. तो जैसे हमने आपको बताया कि directors की presence is mandatory क्योंकि directors are responsible to the shareholder. They have the relationship of agency. They are being appointed to run the company through the management. So presence of directors is mandatory unless there is any reason that no director is participating with the valid reasons. So company should ensure that all the directors and also the senior management is present in the meeting to respond to the questions. Inadequate number of directors, ये अक्सर हमें complaints आती हैं. Technological glitches, जब आप इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटी दे रहे होते हैं शेयर होल्डर को टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, तो वहाँ पे या तो उनकी वॉइस की जो क्वालिटी है या क्वेश्चन करने की जो सलाहियत है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती. शेयर होल्डर के नॉट आस्क क्वेश्चन. तो
it is again on the company that when you are providing the electronic facility, you should also make sure there is a facility of asking questions. Otherwise, there's no point just allowing the shareholder to just participate without having the facility to ask the questions. होल्डिंग एजीएम एट द सेम और क्लोज टाइम, ये भी एक कंसर्न हमारे पास आता रहता है फ्रॉम द शेयर होल्डर कि बहुत सारी कंपनियां अपना एजीएम उस तरह से डिजाइन कर रही होती है, प्लान कर रही होती है जिसमें एक ही टाइम के अंदर मल्टीपल एजीएम्स हो रही होती है। वी अंडरस्टैंड एट द स्टॉक एक्सचेंज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंपनी टू take into account the AGMs already planned by the other companies, but again you can try to minimize the overlapping or the gap that is between the different AGMs. तो आप एक कैलेंडर को रेफर करके आप अपने AGM के शेड्यूल को डिसाइड कर सकते हैं और कैलेंडर में पुट इन कर सकते हैं ऑन द PSX वेबसाइट, ताकि शेयर होल्डर को पता लग जाए कि किसी पर्टिकुलर कंपनी की एजीएम अगर ऑलरेडी हो रही है तो नेक्स्ट एजीएम के दरमियान में और इस एजीएम के दरमियान में कितना टाइम गैप है। तो कैलेंडर हमने आपको दिया हुआ है, उसको आप एट द फुलेस्ट लेवल यूज करें ताकि आपको भी बेनिफिट हो सके, शेयर होल्डर को भी बेनिफिट हो सके। delay in the receipt of certified copy of the minutes of the AGM within 7 days of the request, आपने देने होते हैं minutes, it's a right of the shareholder। लेकिन बहुत बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जहाँ पे 7 दिन के अंदर उनको मिनट्स रिसीव नहीं हुए थे। अगेन दिस इज अ वायलेशन, तो कंपनी शुड मेक श्योर कि जो टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है अंडर द लॉ दैट इज फुली कंप्लाइड विद इन द लेटर इन द स्क्रिप्ट। Fee charged on the receipt of certain documents for the inspection by the shareholder. Particularly, the list of shareholder is one of the important documents referred by the shareholder before the AGM. तो जब लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर की बात होती है तो एक फी या टाइम की बात आती है जहाँ पे शेयर होल्डर अक्सर ही कंप्लेंट करते हैं कि उनको विद इन 7 days शेयर रजिस्टर या फिर मिनट्स या फिर अदर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज देयर राइट टू रिसीव फ्रॉम द कंपनी नहीं प्रोवाइड की गई। तो इसमें अगेन इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू कंप्लाई विद द रेगुलेशन ऑफ द मिनिमम टाइमलाइन and also the set of information that is required to be given to the shareholder upon their request. What are some of the concerns on part of the companies? Provision of incorrect email, अक्सर ये issues हमारे पास आते हैं जब डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है या फिर एजीएम का नोटिस सर्व किया जाता है तो वहाँ पे इनवैलिड ईमेल्स, आउटडेटेड ईमेल्स होती हैं। शेयर होल्डर का एक में प्रॉब्लम होती है जिसको वो टाइमली अपडेट नहीं करा पाता, बट अगेन दी ओनर्स गोज ऑन टू द कंपनी कि आपने ये ट्रांसमिशन नहीं किया। जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ईमेल एड्रेस पे बाउंस बैक हो रही होती है, तो इट इज प्रूवन दैट द प्रॉब्लम इज विद द शेयर होल्डर नॉट द कंपनी। So these are some of the concerns raised by the company that the email address should be maintained in a correct form with the company by every shareholder. And if there is any change, it is the duty of the shareholder to timely update this information with the company. ताकि आपको AGM के notices और बाकी जो communication हो रही corporate affairs पे besides the other confirmation sent to the shareholder such as dividend की अगर आपको information जा रही है तो वो भी आपको प्रॉपर ईमेल के थ्रू ट्रांसफर हो रही हो। आल्सो द बैंक इंफॉर्मेशन, आईबीएन नंबर गलत होते हैं तो आईबीएन नंबर की जो प्रोविजन है टू द कंपनी इट इज अगेन इट शुड बी करेक्ट सो दैट यू रिसीव द डिविडेंड डायरेक्टली इनटू योर बैंक अकाउंट विदाउट एनी हैसल। डिले इन एक्सरसाइजिंग राइट्स बाय द शेयर होल्डर रिलेटेड टू द टाइमलाइंस, जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर वेरियस टाइमलाइंस नॉट ओनली फॉर द कंपनीज बट आल्सो फॉर द शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप अपने राइट को एक्सरसाइज करें तो you should exercise that right within the set timelines. For example, जैसे अगर आपने कोई रिक्विजिशन मूव करनी है या प्रॉक्सी को नॉमिनेट करना है तो देयर इज अ टाइम ऑफ 48 आवर्स की आप मीटिंग से 48 आवर्स से पहले कंपनी को इंडिकेट कर दें दैट यू आर चूजिंग समवन एज योर प्रॉक्सी टू वोट ऑन योर बिहाफ। एंड आल्सो इन द फॉर्म ऑफ मूविंग अ रिक्विजिशन इन द मीटिंग देयर इज अ सेट टाइम ऑफ 10 days बिफोर द मीटिंग। अगर आप उसकी नॉन कंप्लायंसेस करते हैं तो कंपनी हैज राइट टू रिजेक्ट योर रिक्वेस्ट। Inappropriate behavior and conduct while questioning or debating any particular agenda during the meeting. This is very common that when the shareholders are participating in the meeting, they must be mindful that there is a code and also a decorum that they should comply. If there is any question, there's a way of asking a question. You should be very polite and professional while addressing to the management or to the board. इस हवाले से अगेन कानून एक बहुत अच्छा एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है टू द कंपनी that you should establish and communicate a code of conduct for participating in the AGM. अक्सर हमने देखा है कि AGM के नोटिस के अंदर ये कोड अटैच नहीं होता। इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आपके जो मीटिंग के जो मिनिमम प्रोटोकॉल्स हैं
or the code of conduct for participating in the meeting. If there is any code by the company, that should be attached with the notice, ताकि shareholder को पता लग जाए कि अगर आपका कोई सवाल भी है या participation करनी है, तो what are the means, what are the ways you can ask a question, and what are the methods you can participate in the meeting electronically or in person. और ये सारा कुछ आप before meeting set कर सकते हैं, ताकि during the meeting you are having a seamless meeting for the shareholders. Disruption events, just for example, there is any disgruntled group of shareholders who are trying to protest any particular agenda or technological failure or the lack of quorum. Again, if there is a lack of quorum, you cannot run the meeting. Requirement for the earliest dissemination of AGM resolutions necessitate proper planning. As I mentioned that there's a requirement on part of the PSA that the resolutions of the AGM should be announced as early as possible, ideally by the next day. और अगर ज्यादा डिले होता है तो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से एक लेटर चला जाता है. तो recommended required यही है कि आपकी अगर AGM complete हो रही है तो by the next working day you should release your resolutions of the AGM. मीटिंग्स एडजर्न हो जाती है और चेयरमैन के पास ये राइट होता है, चेयरपर्सन के पास राइट होता है कि देयर इज any voice raised by the shareholder and the AGM is unable to conclude any special resolution, then in that situation the chairperson is the right to adjourn the meeting. So this is very frustrating for the company and also for the shareholders who are physically participating in the meeting, that the meeting is adjourned for any untoward situation. And final segment of the presentation, the use of technology. As you can see, that regulations are highly robust and they are very comprehensive, allowing all sort of technology to be adopted from issuance of notice till conclusion of the meeting, even after holding the AGM. So if we divide the AGM process into the 3 stages, there's a pre-AGM stage जहाँ पे आपने notice issue करना होता है. तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा कानून इजाजत देता है कि आप ईमेल के थ्रू भी नोटिस भेज सकते हैं उन मेंबर्स को जिन्होंने आपके पास ईमेल रजिस्टर कराई हुई है. बट इफ समवन इज आस्किंग इन हार्ड फॉर्म, यू हैव टू गिव दिस इंफॉर्मेशन इन द हार्ड कॉपी. यहाँ पे रिकमेंडेशन फ्रॉम द एक्सचेंज टू ऑल द शेयर होल्डर इज दैट यू शुड हैव योर आईडी रजिस्टर्ड विद द कंपनी, ताकि आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है, स्पेशली द एजीएम नोटिस एंड द एनुअल रिपोर्ट, दैट इज ट्रांसमिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. वी शुड discourage the physical distribution of any information. Circulation of annual report. This is really an excellent initiative taken by the SECP in the wake of technological breakthrough, doing away with the traditional method of distributing the annual report in the form of DVDs and USBs. Now this particular traditional method has been replaced with the most modern method of transmitting the annual report in the form of QR-enabled code. QR-enabled code is required to be put on the AGM notice, ताकि shareholders उसको वहीं पे scan करके अपनी annual report download करे. Secondary requirement is to place the annual report on the website. Again, both the methods are electronic and both are acceptable as per the current laws. Provision of e-portal, जैसे मैंने आपको बताया कि this is recommended, not required under the law, that proper communication portal should be devised by the company for the shareholder, especially in the context of AGM, enabling the shareholder to raise their questions through the electronic means. Ideally, this should be electronic means, but again, company उसको in the form of letter भी receive कर सकती है. अगर हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इसको भी हम टेक्नोलॉजी बड़ा आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल बना दें फॉर द शेयर होल्डर, और उसी पोर्टल के थ्रू आपके पास सवाल भी आ रहे हैं और उसी पोर्टल के थ्रू आप उनको रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. Video link, it's the best way of introducing technology in the AGM. Globally, it's well adopted that most of the AGMs are now run through the hybrid model. So electronic facilities on top of the list. Provision of e-voting facility. This is again a mandatory requirement that आपने e-voting facility देनी है shareholder को, ताकि electronically भी अगर कोई vote करना चाहे तो वो कर सकता है. Audio video recording. This is something new that we are discussing. स्पेशली लास्ट ईयर एसईसीपी की एक एजीएम की रिपोर्ट रिलीज हुई थी जिसमें ये एक रिकमेंडेशन थी कि इन ऑर्डर टू सेट दी गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स विद इन दी प्रोसीडिंग्स ऑफ द एजीएम की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाए, या ऑडियो फॉर्म में या फिर वीडियो फॉर्म में. अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके बहुत सारे फवायद होते हैं कि जो शेयर होल्डर डिसग्रंटल हो जाते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग,
उनको आप टोन डाउन कर सकते हैं, क्योंकि एक थ्रेट होता है कि देयर इज समवन watching you through the video or audio facility, or if no one is watching you, there is a recording जिसको बाद में रेफर किया जा सकता है for any dispute resolution. So it's a control on both the parties, shareholder as well as on the issuer, that they are running the affairs of the AGM in a proper manner. तो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग की एक अभी तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं इनकरेज कि आप लगता है तो उसको रेफर करके उस पर एक इफेक्टिव रेजोल्यूशन की तरफ जा सकें, जिसमें बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं कंपनीज के भी और शेयर होल्डर के कि मेरे सवाल को सही तरह से सुना नहीं गया या मेरे सवाल को सही तरह से रेस्पॉन्ड नहीं किया गया था। तो इन सारी चीज़ों को लाइव देखने के लिए हमारे पास एविडेंस होती है इन द फॉर्म ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग और द ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो इसको आप जरूर कैप्चर करें इन योर ओन इंटरेस्ट। यूज ऑफ एआई टूल्स मिनटाइज करने के लिए आजकल बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिसमें आप एआई टूल्स को यूज करते हुए आप अपनी मीटिंग के मिनट्स को मिनटाइज, अपनी मीटिंग की प्रोसीडिंग को मिनटाइज कर सकते हैं at the starting level. Of course, you have to fine tune those draft minutes, but AI tools के थ्रू आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, मिनटाइज कर सकते हैं। ई प्रॉक्सी फैसिलिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन इट इज रिकमेंडेड कि अगर आप प्रॉक्सी की सहूलत इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दे दें कि बजाय से कि आप पेपर मूव कर रहे हो, पेपर आपके पास आ रहा है, कभी कभार डिले हो जाता है, टाइम पे नहीं आता 48 आवर्स के अंदर, या इवन दरमियान में कहीं पे पेपर आपका लॉस्ट हो गया, तो कंपनी इज नॉट रिसीविंग द पेपर and ultimately this is converted into the dispute that I moved a paper in the form of proxy, but my proxy was not allowed. तो उसको रिजॉल्व करने का एक अच्छा तरीका है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली एक फैसिलिटी दे दें, ताकि किसी को अगर प्रॉक्सी किसी ने डिक्लेयर करना है तो वो आपके वेब पेज पे जाके वहीं पे उसको रजिस्टर करा दे। फाइनली ई लाइब्रेरी फॉर द एजीएम एंड सीबीएस, दिस इज अगेन रिकमेंडेड नॉट रिक्वायर्ड, कि आपकी जितनी भी हिस्टोरिक एजीएम्स हैं या इवन आपने जो एनुअल ब्रीफिंग सेशंस किए हैं, आप उनकी एक लाइब्रेरी मेंटेन कर सकते हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यू कैन पुट इट ऑन योर सोशल मीडिया पेजेस लाइक यूट्यूब। अगर किसी ने पास किसी एजीएम को रेफर करना है तो आप उनको एक इन द लास्ट 5 years लास्ट 10 एजीएम अवेलेबल कर सकते हैं फॉर ईज ऑफ रेफरेंस, फॉर ईज ऑफ एक्सेस एंड ईज ऑफ ट्रैकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी के पास्ट मीटिंग के अंदर क्या डिस्कस हुआ और क्या प्रोग्रेस जो है हमें पूछनी चाहिए फ्रॉम द कंपनी द करंट एजीएम। तो this is one of the tools the companies can adopt to put your AGM on the social media pages. So these are some of the tools that you can see starting from the first stage, issuance of notice, till the conclusion of the AGM, and also post AGM when you are dealing with the shareholder after the AGM. During all three stages, you can adopt technology and maximize from the benefit of the technology in terms of resolution of the shareholders' grievances, and also capturing the records of the AGM for your own benefit. This was my presentation. Thank you so much, Ajeet, covering so far all of the relevant required information, which will be definitely beneficial for all of us. We can have a question and answer session now, and we've been receiving a lot of questions in the chat box already. And I'm thankful to Shahzad, who's already responding to the questions to the participants directly in the chat box. Appreciate that, sir. Sir, towards you, Shahzad Sahab, I'm asking a question. So regarding, is there any accountability mechanism of Directors and Companies Act 2017 and Code of Corporate Governance Regulations 2019? Saqib Jalil Malik Saab hai, he has asked this question. Shahzad Sahab? Ghazain, can you come again, please? I couldn't listen. So, Saqib Jalil Malik Sahab hai, he has asked that is there any accountability mechanism of directors in Companies Act or Code of Corporate Governance Regulations? That's the question. Of course, Saqib Sahab, yes. In fact, if you see all the provisions, we have just discussed Section 183, which says that the affairs of the company will be managed by the board of directors. So if there is any compliance of any provision of the act, the responsibility is levied upon the directors for such non-compliances. We know that shareholders have limited liability, and limited liability, of course, is extended to the fact that
Just give me a moment. Hello, sir. Sir. We can if we can move on to Mr. Ajeet. I'm asking you a question in the meantime. So Sure. we have a question from Danish Raza that is on ESG actually. In line with SEC promotion of ESG principles and considering today's digital age, should not companies transition away from physical annual reports and fully embrace digital alternatives to minimize environmental impact and promote sustainability? It's regarding to go on to the online thing instead of circulating the physical one. I think you covered your I in think your I have presentation. I've already covered in the presentation. If the question relates to the annual report, annual reports are no longer required to be distributed in the physical form. There's a QR-enabled code on the website where you can place your annual information, and all the members are now required to access this information through electronic means, unless there is any request by a member that they need this information in the hard form. So in that case, the company is required to distribute the copy. Otherwise, everything has to be electronically. So there is no need to distribute physical copy. Even for the PSX, earlier we used to call 200 hard copies from the companies for record purpose. That we have done away, I think back in 2016. We no longer require any copy by any company, from any company. Thank you very much. Shahzad Saab, coming back to you, you were Yes. responding. Yeah, Yes, please. I may continue, please. So, for all kind of violations, the directors are held responsible. For example, if you have sold your assets without the approval of shareholders, which are significant in nature, the Section 183 will come into play, and the directors are responsible for non-compliance. Same goes for the as for the corporate governance. The mandate, we know that the Code of Corporate Governance has mandatory provisions and non-mandatory provisions. If there is a violation of a mandatory provision, it is the board of directors who are liable for that contravention. So we have more than 400 orders in the previous financial year. Since I was heading the adjudication department then, more than 400 orders have been issued, and they've been issued against the directors. In some cases, directors were penalized. In other cases, the directors were warned, and in some cases, we have also disqualified the directors for the wrongdoing. So yes, the accountability process is very robust and is in place at SECP. Right, sir. Thank you, Shahzad Saab. My next question is from Ajeet. आपसे है. There's a question by Saqib Sahab again. In Pakistan, most or all brokerage houses are companies of different types. There is skepticism about qualification degrees of directors of brokerage houses. Does SECP and or PSX verify their qualifications and experiences before licensing them to operate brokerage houses? So we have a set of fit and proper criteria, which is fully applied on the directors, senior management officers. And in the senior management officer, there are certain categories which fall, like compliance officer, the head of operation, the head of sales, and also the head of internal audit. These are the senior management positions which are required to comply with the fit and proper criteria. And when the company is onboarded as the broker, before SECP grants them the license of broker, PSS grant them the license of TRE certificate. So at both the stages, PSX and also the SECP, as per their own regulation, verify if the company as well as the company's people who are the individuals are fully compliant with the fit and proper criteria, and only after that we give them the track and SECP give them the broker license. So if there is any particular question, any particular case or any particular complaint, the question asked by the participant can be raised to the exchange in person so that we can look into this. Otherwise, there is a criteria for everyone to comply. Right. Be with me, Ajeet. I have a quick question from Mavish Munir. She has asked, can you recommend any AI tools that you mentioned for recording or transcripting minutes of the meeting? I cannot. These days, It can be done by the IT departments. There is no prescription from any regulator. There cannot be. In fact, जब हम AGM और CBS की अभी recently last month SECP और PSX ने consultation session किए थे, और इसमें हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की
जो है बात की थी और मिनट्स को एआई टूल्स के थ्रू रिकॉर्ड करने की भी बात की थी। तो वहां पे एक रिकमेंडेशन ये आई कि जो आईटी की जो स्पेसिफिकेशन है दैट शुड बी प्रिस्क्राइब बाय द एक्सचेंज। तो हमने उसको स्ट्रेट अवे डिनाई किया कि देयर कांट बी एनी प्रिस्क्रिप्शन ऑन आईटी पार्ट बाय द रेगुलेटर। This has to be done by the IT department of the company depending upon their business scale and the IT policy. तो अगर आपकी शेयर होल्डिंग बेस इतना बड़ा है, वाइड स्प्रेड है, इंटरनेशनल है, तो आपकी आईटी पॉलिसी कैन बी डिफरेंट देन अ कंपनी which is operating at the local scale और उनका शेयर होल्डर बेस इतना ज्यादा नहीं है, which is mainly concentrated with selected shareholder 90-95%. So it totally depend upon the company's IT policy. There can't be any prescription, but there are tools available in the market which you can put on the system. They can record the minutes on your behalf without you doing the recording of the minutes. But आप उसको ज़ाहिर edit कर सकते हैं, fine tune कर सकते हैं. Right. Okay. I have a question for Shahzad sir. Roxana Rustam from Mizan Bank, Manager Corporate Affairs. She has asked, e-voting is compulsory or is subject to requirements of sections 143 and 144 of the Act, Companies Act 2017. As So you know, there's yeah, sorry, there is a yeah, please. circular now in place, and pursuant to that circular, it is mandatory to now go for e-voting. There are few orders which have been issued in the last fiscal year, that is 2024, and till November, I believe that the AGMs pursuant to the AGMs held for the year of 2024, the annual year, financial year 2024, all the cases where this e-voting was not provided, penalty has been imposed on companies for violation of a circular pursuant to section of 512. It has not been dealt under section 143. Yes, I understand that there is some anomaly, or people perceive it as a requirement contrary to this action, which specifically requires that if 10% or more apply for the videocon facility, only then such facility can be given. But no, the application of circular is very clear that every company during the AGM has to provide e-voting mechanism to the shareholders. Right, sir. Sir, again, a question for you, Shahzad sir. When video conference facility is required to be provided to shareholders? In every Yeah. case, as I have just mentioned, that in the law it is required that if 10% or more ask for the facility, then you provide. But then the SECP has provision to issue circulars and notification, and through that circular, requirement has been levied that in for the purposes of e-voting, you have to comply with the requirements of technology. It is actually written in our preamble. If you read the preamble of Companies Act 2017, it talks about technology. So we cannot restrict us to one section, holding us back to provide such facility. Just like we are more than 100 people engaging ourselves into this webinar, why can't a company engage their shareholders through such mechanisms? So a proper secured mechanism need to be provided wherein through electronic means shareholders can participate in the meetings. Right. Thank you, sir. Further to what has जी, just described, क्योंकि इसमें हमारे पास जब एजीएम्स हो रही होती हैं तो शेयरहोल्डर की तरफ से कंप्लेंट्स भी आती हैं, बल्कि एजीएम के अंदर ये कि डिफिशिएंसी, आई वुड से कि देयर इज अ डिफिशिएंसी इन द एजीएम नोटिस that you are not prescribing the manner of participating through videocon facility. Now it is required very much clearly by the SECP through the circular issued back in 2021 that every company has to provide the videocon facility, overriding the section that already says कि आप 10% को राइट दें. तो ऐसा नहीं है, 10% वालों को राइट है कि वो इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी ले सकते हैं, बट थ्रू द सर्कुलर ऑफ द SECP लेटेस्ट सर्कुलर this facility is to be provided for everyone. So this is now a mandatory requirement for the companies. Yeah, thank you, sir. Ajeet sir, this is not overriding effect. And we cannot say it's an overriding, it's an additional requirement. Yes, the requirement is there, and this is an additional requirement. Yeah. Right. Thank you for clarity. I have a question for Ajeet sir. There's a question by
Saqib Jalil Malik Sahab, can shareholders approach courts? You mean his meaning is a legal court? If they are aggrieved or see discrepancies in all or any agenda of the meeting, please elaborate. Yes, they can. They have the right under the Companies Act that they can file the suit in the court for a particular agenda if they are meeting their threshold of 10%. Shahzad Sahab, I have a question for you. It's regarding compulsory. Yeah, it's done. What disclosures must a person give before his intention to become or contest election of directors? It's regarding giving the intention of there's a consent of intention to be submitted. The requirements are actually they have to disclose their consent to act as director, and obviously they have to disclose that they are members. There are few requirements which are to be displayed. The entire CV has to be, the profile of the candidate has to be presented by the company before the annual general meeting and is placed on the website of the company also. These are the credentials of those directors intending to elect as independent directors. For all those directors, they are required to provide their profiles, which are to be placed on the website of the company. Thank you, sir. Thank you so much. I have a last question from Shahzad sir. There's a question by Mr. Mohammad Adnan Ahmed. Who will carry performance evaluation of board of directors? And is there any document criteria available for such evaluation? Of course, the board of director will evaluate the performance of each member of the board. So they are there, and this criteria is generally available in best practices, but it is the company policy to create an evaluation criteria for the particular board member, especially their role in contributing to during the board meetings, their contributions level they're in, and what kind of role they have played and effectiveness they have executed in their performance of duties. So all these are part and parcel of the evaluation criteria, and this is to be developed by the company. Right, sir. Thank you so much. I have a last question for Ajeet. आपके लिए. How a foreign company who holds 50% shareholding can appoint its nominee director in a private company post election of directors? And bear in mind that during election of director, the foreign company did not appoint any nominee director. You are on mute, Ajeet. Sorry, can you please come again? What's the question? Yeah. So it's basically how a foreign company who holds 50% shareholding can appoint its nominee director in a private company post election of directors. Not So clear it's the first about half. Yeah, it's the first half of the question, and then they're saying during election of director, the foreign company did not appoint any nominee director. So in the election time, they haven't appointed any or nominated anyone, but post election of directors, they are having 50% of holding, and they wanted to nominate someone. Shahzad sir, can you help this out? Yes, I can. See, it's quite a the tricky process. No, it's not at all tricky. The the process of election starts with the 35 days prior meeting of the board fixing the number of directors. This is the first and foremost requirement. If that number is fixed, that number cannot be altered until the next election. So if they have not elected in their election and complete vacancies, all the numbers fixed for the election is completed during the process of election, then only casual vacancy can create a new vacancy for the director. And 164 cannot come into play at this stage in time. 164 can come into play only at time of election of director. So the bus has passed, the train has gone for this entity. The only procedure during the midterm is 162.
when there is change in the shareholding of the requisite holding. I have mentioned that in the comments as well. So I believe that such interest cannot be represented during the currency of the period where the term of the term and number of directors have already been elected through an election process. Right, Shahzad Saab. On that note, I'm really much thankful for your contribution to this webinar. And definitely, we have received so many other questions which we'll definitely address later on. We have been asking all the participants to provide their email addresses so that we can revert on their questions or share with our panelists the questions so that they can answer on that. Before we conclude, we would like to invite our esteemed speakers to share their closing remarks. I'll start with Shahzad Saab first. Would you like to share your final thoughts on today's discussion, sir? Thank you so much, and I'm truly grateful to PICG and especially Ghazain to you for providing us this opportunity. It has been a vibrant audience. When I was delivering my presentation, I thought I am the only one attending the webinar, and later on, I realized the comments and the feedback we have received and private comments. Most of them have already worked with me. Saqib from Angro and Danish from Angro has already worked at SECP, and they were really very encouraging. And all the remarks I've been receiving on phone as well are very encouraging. I'm grateful to all the participants. They've been really supportive, and PICG again, and Ajeet has been a fantastic co-presenter in the seminar. I'm truly grateful. This is a great opportunity. We should continue and do these kind of webinar on regular basis. Thank you. Thank you, Shahzad. Ajeet Saab, we would also appreciate your closing insights. Yeah. मैं हमेशा ये कहता हूँ, बल्कि लास्ट टाइम भी हमने पीआईपीजी के साथ ये किया था, तो उसमें भी बेस्ट कॉम्बिनेशन थी, वन ऑफ फ्रॉम द एक्सचेंज, द अदर फ्रॉम द एससीसीपी। नॉर्मली क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है कैपिटल मार्केट का, दैट इज टू टीयर्ड। The top is the SECP, in between the market and the SECP is the apex frontline regulator PSX। तो जब हम ज्वाइंटली कर रहे होते हैं तो बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं पार्टिसिपेंट्स के, जो कुछ PSX एड्रेस करता है, कुछ SECP कर रहा होता है। Had been a situation where only PSX sitting or SECP sitting, the question may remain unaddressed. So this is the beauty of the PICG, that they engage at least two, one from PSX and the SECP. So this should continue. These kind of sessions should continue for the larger interest of the shareholder as well as the companies. So my request again with the PICG would be to continue to have such sessions frequently in the future, engaging SECP and PSX at the disposal of the participants. Thank you so much. Thank you to our esteemed panelists for their valuable insights and to all participants for engaging in today's discussion. Before closing, I request everyone to turn on their cameras for a group photo. It's a tradition. All are visible.